Today we are discussing the part 5 of my lecture on water topic. In this topic, we will be discussing potable water. We will be discussing the first we will discuss potable water, then we will discuss the characteristics of potable water, then we will see what is the process that is undertaken to manufacture potable water. I am Dr. Sangeeta Krishnan. So the water that is used for drinking purpose is called as potable water. पीने का पानी या वो पानी जो पीने के लिए इस्तेमाल होता है उस पानी को कहा जाता है पोर्टेबल वाटर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कि पोर्टेबल वाटर के अंदर क्या गुण होने चाहिए, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कलरलेस होना चाहिए, उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो ओडरलेस होना चाहिए, उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की स्मेल। तीसरा आता है वो कि वो टेस्टलेस होना चाहिए। उसके अलावा उसके अंदर जो टोटल हार्डनेस है वो 500 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसका जो क्लोराइड कंटेंट है वो 250 के अंदर होना चाहिए, 250 से अधिक उसका क्लोराइड कंटेंट नहीं होना चाहिए। उसका जो पीएच है वो 7 से 8 के करीब होना चाहिए। उसके अंदर कोई भी जर्म्स नहीं होने चाहिए, कोई भी हार्मफुल जर्म्स नहीं होने चाहिए। कुछ और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इसकी टर्बिडिटी 25 ppm से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। देयर शुड बी नो हैवी मेटल्स लाइक आर्सेनिक, मर्क्यूरी, क्रोमियम इनसाइड इट। नेक्स्ट इज इट शुड बी फ्री ऑफ H2S गैस। H2S गैस से बैड स्मेल आती है, तो इसमें H2S गैस भी नहीं होनी चाहिए। एंड लास्टली, इसके जो टोटल डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स वो 500 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए, उनकी वैल्यू 500 से कम ही होनी चाहिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन पोर्टेबल वाटर। So first is, what is potable water and what are its characteristics? What are the steps that are undertaken to make potable water? Then we have, what is disinfection of water? Explain any 5 methods of disinfection. And what is the difference between disinfection and sterilization of water? And explain breakpoint chlorination. Next, we will start with the various steps that are there to make potable water. So there are 4 basic steps, 4 steps हैं इसके अंदर। सबसे फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर जिसका कि नाम है स्क्रीनिंग। सेकंड है इसके अंदर जिसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। थर्ड है फिल्ट्रेशन। एंड लास्ट स्टेप है इसका और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे कहा जाता है डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। अब इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम में आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये डायग्राम है जो कि एक्सप्लेन करता है पूरे प्रोसेस को, ये एक्सप्लेन करता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्टेप्स के साथ, जिसका कि नाम है स्क्रीनिंग। नाउ इन केस ऑफ स्क्रीनिंग द वाटर इज मेड टू पास थ्रू बिग सीव्स। बड़ी बड़ी छल्लियों में हम वाटर को पास करते हैं और इसका एक ही प्रोसेस है, इसका एक ही तरीका है जहाँ पर आप जितनी भी सॉलिड इम्प्योरिटी, एक्चुअली वाटर के अंदर सॉलिड इम्प्योरिटीज़ भी हैं, लिक्विड इम्प्योरिटीज़ भी हैं और डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ रहती है पानी के अंदर। तो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए, सॉलिड इम्प्योरिटी जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं है उसको हटाने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। जहाँ पे बड़े बड़े सीव आप देख सकते हैं, ये सीव को देखिए, ये बड़ी बड़ी छलनियाँ हैं, इसके अंदर पानी को पास किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि इन सीव्स के थ्रू पास करने से
सॉलिड्स, जितने भी सॉलिड होते हैं जिसमें स्टोन्स हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं, वो सारे आपके बाहर आ जाते हैं। सेकेंड स्टेप किया जाता है जिसको कहा जाता है सेडिमेंटेशन इन वाटर. Now, in case of sedimentation, as you can see that there are these big tanks are there in which water is collected, and then it is left undisturbed for 5 to 7 hours, and some amount of coagulants are added like ferrous sulfate, ferrous chloride, alum, etc. are added. So on adding of these substances, whatever impurities are there, it settles down. तो पानी में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी की सारी सेटल डाउन कर जाती हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। थर्ड स्टेप आता है जिसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। नाउ फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर के अंदर पानी के अंदर जितनी भी डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, सैंड फिल्टर यूज़ किया जाता है। यू यूज़ अ सैंड फिल्टर, और सैंड फिल्टर में पास किया जाता है वाटर को। तो सैंड फिल्टर में 3-4 चीज़ें होती हैं उसमें। कोर्स सैंड होती है, फाइन सैंड होती है। कोर्स कोर्स का मतलब जिसका मैश साइज़ ज़्यादा है, फाइन जिसका मैश साइज़ छोटा है सैंड के पार्टिकल का। सैंड यानी रेत, उस रेत में से पास करते हैं। और उसके थर्ड पार्ट में होता है ग्रेवल। ग्रेवल यानी नॉर्मल मिट्टी, उसमें से पास करते हैं। तो जब वाटर इसमें से पास होता है 3-4 लेयर्स में से, और ग्रेवल के नीचे जो लेयर होती है दैट इज़ ऑफ मेड अप ऑफ स्टोन. So when water passes through all these layers, whatever dissolved impurities are there, पानी के अंदर जितनी भी घुली हुई impurities होती हैं वो सारी इनमें इन 3-4 लेयर्स में जाने के बाद रिमूव हो जाती है। अब आपका जो वाटर है यहाँ तक थर्ड स्टेप करने के बाद ना तो इसमें अनडिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ है, इसमें मिट्टी भी नहीं है, और तीसरा इसके अंदर डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ भी इसकी रिमूव हो गई। ये पानी बिल्कुल प्योर है। बस अब इसमें एक ही चीज़ है, दैट मीन्स जर्म्स आर देयर। इसके लिए किया जाता है फोर्थ स्टेप। नाउ द फोर्थ स्टेप इज एक्चुअली डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। इन दिस द वाटर इज टेकन and in this large amount of substances are added, and as a result it is made germ free. There is another term that is associated which is called as sterilization of water. Now sterilization is something that was done in olden days, where you take anything and you boil it in water. So all type of germs are killed in this, and this process is called as sterilization of water. In case of disinfection, only the harmful germs are killed but the usefuls are still there. Now there are various ways by which the disinfection can be done. Some of them are as follows: ultraviolet light, boiling, aeration, iodine, potassium permanganate, ozone. Then there are some in which chlorine is used, like liquid chlorine, chloramine, and bleaching powder. Now we will discuss all of them in detail. Now first method is boiling. In case of boiling, as the name suggests, water is taken and it is heated, and by heating the harmful gases like hydrogen sulfide are removed and it is made germ free. Now this method is only convenient for a small family, but when water is being clean, पूरे सिटी का पानी क्लीन हो रहा होता है, वहाँ पे बॉइलिंग करना पॉसिबल नहीं होता. Second method is aeration. Now in case of aeration, the water is taken और इसमें ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ एयर पास की जाती है. तो एज अ रिज़ल्ट इसमें पानी का ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ जाता है. तो ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ने से पानी का टेस्ट इम्प्रूव हो जाता है, कलर इम्प्रूव हो जाता है, और इसमें यदि हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, और उसका स्मेल भी उसमें इम्प्रूव हो जाती है, उसमें नो स्मेल हो जाती है. नाउ अगेन एरेशन मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स हैं. ये एक स्मॉल फैमिली के लिए किया जा सकता है. सेकेंडली, एरेशन
से जर्म्स ज़्यादा मरते नहीं हैं, तो इसलिए ये मेथड स्मॉल स्केल के लिए आप कर सकते हैं, बट लार्ज स्केल वाटर के अंदर पॉसिबल नहीं है. Now the third method is called as ultraviolet light. Now this is done for again for a small family. We have aquaguard and all, in which ultraviolet light is used. So there are lamps which are filled with which generate ultraviolet light, and when water is made to pass through this, by exposure to these ultraviolet light, the germs get killed. Again, this method is only used for a small family because it requires large amount of electricity. For cleaning water for the whole city, it is not possible. नेक्स्ट मेथड है आपका जिसका कि नाम है पोटेशियम परमैंगनेट. अगेन दिस मेथड कैन बी यूज्ड. दिस इज बाय एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. अगेन दिस मेथड is used for wells, cleaning of wells and all, but for city it is not possible because the color of the solution changes from colorless to pink because KMNO4 is pink colored. Next method is called as iodine. Now in this, water is taken and some amount of iodine is added, and this again is used for smaller wells and all, but for cleaning water of the city this method cannot be used. Next we have the chlorine method. So first we start with the liquid chlorine method. Now in case of liquid chlorine, as the name suggests, water is taken and on one side liquid chlorine is passed into it. So and the two mix together and there is a reaction that takes place. We will discuss the reactions of all chlorine compounds in one go, and in this way the germs get killed. Next is chloramine. The formula for chloramine is ClNH2. So if you take ammonia and if you pass chlorine into it and only one atom of hydrogen is replaced by chlorine, then chloramine is formed. Now this also is a good and easy method to disinfect water. Last method is bleaching powder. So by addition of bleaching powder also, the disinfection of water can easily be done. Now these are the reactions of all the chlorine methods. First of liquid chlorine. So when we take liquid chlorine and pass in water, then the compound that is formed is HOCl and HCl. Now this HOCl reacts with germs and as a result germs get killed. Now the second reaction is of chloramine where ClNH2 is taken and when water is added to it, then HOCl is produced and ammonia gas is liberated. HOCl again reacts with germs, so germs get killed. The third is bleaching powder. So if you take bleaching powder and you add water to it, then again calcium hydroxide is formed and along with that HOCl is there. HOCl reacts with germs and as a result germs get killed. Now all chlorine methods are used whenever we are cleaning water for the whole city. Then these chlorine methods are preferred. They are not expensive and can easily be done. There is only disadvantage that is there. That is, if chlorine is added in excess, then three things happen. First of all, the taste from tasteless becomes bitter on addition of excess of chlorine. Secondly, the color of the solution from colorless changes to yellow. And smell develops in case of chlorine. So these are the three demerits of chlorine methods. Now the last topic that we are doing today is breakpoint chlorination. So whenever we are using chlorine, then this breakpoint chlorination comes. Now in the breakpoint chlorination, this is a graph as you can see. On one side we have liquid chlorine and on the other side is the time. So this graph has been explained like this, that if you have water
and if you add chlorine into it, then first a reaction takes place between water and chlorine, and chlorocompounds are formed which start increasing in nature. So as a result we get an upward slope of substances. Then this chlorine first it oxidizes the impurity and reacts with germs, and as a result the germs get killed. So in this process the reaction, the flattening of the curve takes place, and it drops down to a particular point. Now this point is called as the dip point. After that an increase takes place. Now this is the residual amount of chlorine that is left if any further attack of germs takes place. So the amount of chlorine that has to be added is till the break point. The chlorine is added. And if chlorine is added in excess, then as I told you about the demerits, the taste converts from tasteless to bitter taste. The color of the solution changes from colorless to yellow, and the odor, from odorless it develops an odor. A pungent odor develops. So water has to be added till the break point or the dip point, and this contains the by adding water till the dip point, the cleaning of water takes place and little amount of chlorine is left for further attack of germs to take place. I thank you very much for listening to me. I hope the concept of potable water, which is drinking water, is now clear to you. You have also understood the characteristics that should be present in potable water. Then you must have understood the steps, the 3 to 4 steps that were taken. First, the removal of solid impurities by screening, then removal of mud or sediment by sedimentation, then removal of dissolved impurities by filtration, and lastly, the water has totally become clean but there are germs in it, so germs have to be removed because the people will get diseased if they drink such a water. So disinfection of water is done, and according to the need, whether it is being done for a small family or it is being done for the whole city, a disinfection method can easily be chosen. For every method we have done the method how to do the disinfection, and we have also seen the advantages or the disadvantages that are present. I hope your concept of potable water is now clear and you have even understood the reactions that are there, and you must have understood that when HOCl has a special ability, when it falls on the germs, all the germs get killed. I thank you very much for listening to me. Thank you.